सेल कल्चर के हवाले से जब एक्सपेरिमेंट प्लान किया जाता है तो उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि हमें किस किस्म की सेल लाइन लेके चलना है। सेल लाइंस में हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, फाइनाइट सेल लाइंस और इनफाइनाइट और कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस। फाइनाइट सेल लाइंस जैसा कि पहले जिक्र किया, they are mainly the primary cell lines or primary cells which are isolated from an organ and then they are cultured. अब इन cells की एक property है कि after some passages they lose the ability of division, and this happens because of some genetically determined factors or event which is known as senescence. This senescence makes it possible that there is no further division of the cells and the cells cannot be established in the culture. This property makes these primary cells as finite cells. इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो continuous cell मौजूद हैं, continuous cell lines मौजूद हैं। continuous cell lines को infinite cell lines भी कहा जा सकता है depending upon the ability that they are immortal. अब हमारे पास जो प्राइमरी सेल लाइंस हैं दे कैन बी मेड इमॉर्टल बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस जेनेटिकली भी हो सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को हम केमिकली भी इंड्यूस कर सकते हैं। वंस द सेल्स डिटरमिन और सेल्स पोजेस दिस एबिलिटी दैट दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, देन वी कॉल दीज सेल्स एज कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस। अब किसी भी किस्म के सेल को जब कल्चर कंडीशंस में लेके जाना है तो हमें उसकी कल्चर कंडीशंस का ख्याल रखना है कि कौन सा मीडियम चाहिए, उसमें कौन से ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। बिकॉज जब हम सेल की बात करते हैं, द सेल इज गोइंग टू सर्वाइव सिमिलर टू एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और एनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट फ्रॉम विच द ऑर्गेनिज्म कैन डिराइव एनर्जी। उसके बाद ऑर्गेनिज्म को जो है ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो ग्रोथ के लिए द ऑर्गेनिज्म नीड्स ग्रोथ फैक्टर्स। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय अ सेल इन द सेल कल्चर. These requirements are going to be met by adding these nutrients or these growth factors or these hormones in the culture media, and then incubating these cell lines or cell cultures in such an incubator where carbon dioxide and oxygen can be maintained. And then we have to keep an eye on the pH of the culture media, because after respiration we see a visible change in the color of the culture media. That is because of accumulation of lactic acid, which is a byproduct of respiration as well as the metabolism of the cells. So we have to, time to time, we have to replace the cell culture media, and the cells can be maintained in the culture for longer time, keeping in view the confluent stage of the cells.